नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खास खबर। भारतीय संविधान व समान नागरिक संहिता पर हुआ व्याख्यान। मेवाड़ विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा बुधवार को भारतीय संविधान, न्याय प्रक्रिया व्यवस्था व समान नागरिक संहिता पर व्याख्यान आयोजित हुआ। विधि विभागाध्यक्ष डॉक्टर विष्णुप्रिया दधीच ने बताया कि भारतीय संविधान, न्याय प्रक्रिया व्यवस्था व समान नागरिक संहिता पर उद्बोधन देते हुए संविधान विशेषज्ञ मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक मिश्रा ने विधि विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की विशेषताओं व उसकी वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय संविधान, न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया समय समय पर उनमें आए बदलावों से अवगत कराया। विभिन्न प्रकार के केस लॉज का उल्लेख करते हुए उदाहरणों के साथ समझाया। समान नागरिक संहिता व न्याय प्रक्रिया के संबंध में आने वाले विभिन्न चुनौतियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दिया। इस अवसर पर विधि विद्यार्थियों ने उनके द्वारा दी गई जानकारी उत्सुकता से सुना व समझा और कई नई जानकारियां हासिल किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर प्रदीप डे, मानवी की व समाज विज्ञान संकाय की डीन डॉक्टर सोनिया सिंगला, डीएलएड विभाग डॉक्टर महेश दुबे, ब्रांड मैनेजर अमित कुमार चेचानी, संगीत प्राध्यापक हरिओम गंधर्व, डॉक्टर डीके वर्मा, आशीष अग्रवाल, विधि विभाग फैकल्टी सुगम तीनबार, इबाशिशा सूचियांग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। Only two officials, as you know, I might have mentioned earlier, that President of India and Governor of any province of India takes the oath to preserve, protect and defend the Constitution. It's the responsibility of President and Governor at the state level to ensure that the Union of India stands managed, stands administered as per the provisions of the Constitution. Constitutional machinery must work. The moment constitutional machinery fails, the governor may advise in the state that President's rule may be proclaimed under Article 356 of the Constitution. But there can never be President's rule at the Union. So, Article 44, Directive Principles of State Policy. On that I had spoken earlier also on the topic of Directive Principles of State Policy. So, if the only article, the only directive which remains yet to be accomplished in India, rest of the directive principles have been achieved by and large. Laws have been made, laws have been implemented, lot of efforts have been done with regard to the implementation of directive principles in the country, and they stand implemented in a big way. The only article which remains from the side of Parliament to be implemented, of course from the side of judiciary it stands implemented to a great extent, and in parts even by Parliament, but Uniform Civil Code is still pending. We must understand two terms. One is Uniform Civil Code and another is Common Civil Code. And both the connotations are different. Uniform Civil Code is something different and Common Civil Code is something different. Both are different. Common Civil Code will be a situation if best of the best, if provisions or practices or traditions of all the religions of the world, they are brought at one place. Best practices of Mohammedan religion brought in Common Civil Code. Best practices from Hindu religion brought there. Best practices from Sikhism brought there. Of Parsi religion, Zoroastrianism brought there. Of Judaism brought there. Then it will be a common civil code for all. But if a modern law is made on scientific and rational lines and it is implemented uniformly to all, then it will be a uniform civil code. This is what is the difference between two terms. And Constitution of India uses the term Uniform Civil Code, not exactly the Common Civil Code. But still there is possibility, like it's for the Parliament to decide and to consider whether they can go
for common civil code also. While drafting or making uniform civil code, they can have the best of the best from other religions also. There is no bar on that, because some of the provisions in every religion are very, very good in that.